नमस्कारम एवरीवन। आज आप देख सकते हो कि मैं हूँ डायरेक्टली कैब में। जनरली मेरा व्लॉग शुरू होता है गुड मॉर्निंग से, सुगमानो से। तो शायद गुड मॉर्निंग को मलयालम में सुप्रभात बोलते होंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा गुड मॉर्निंग को मलयालम में कैसे बोलते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ त्रिशूर के लिए। तो अभी ये त्रिशूर नहीं है, फॉर श्योर मैं अभी कैब में हूँ, जिसमें मैंने एक बड़ी प्यारी सी डॉल देखी है, जिसका मैंने ये वीडियो शूट कर लिया है। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। रास्ते भर में, बस में, ट्रेन में, कैब में, अगर कुछ भी मुझे क्रिएटिव दिखता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आफ्टर हैविंग अ ब्यूटिफुल वीक एट कोच्चि, नाउ आई एम फाइनली गोइंग बैक टू त्रिशूर। तो त्रिशूर जाना मेरे लिए बड़ा ही, आप कह सकते हो, बहुत ही फेवरेट टाइम होता है, बिकॉज फर्स्ट आई लाइक टू ट्रेवल टू त्रिशूर। अभी तो मैं ट्रेन ले रही हूँ बिकॉज यू नो there is a road construction going on, due to which it's very hard to take a like bus, otherwise you will be very late. So that's why I'm taking train these days. Generally I do not travel with the trains for Trishur because Trishur is very much near and I like the way also. और जैसे ही मैं घर में आई मुझे दिखा कि त्रिशूर में तो बहुत बारिश हो रही है। यू नो कंपैरेटिवली कोच्चि से ज़्यादा त्रिशूर में बारिश हो रही है। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी लोग त्रिशूर में, उन्हें पता होगा कि त्रिशूर का मौसम इस समय कितना ज़्यादा ठंडा हो रखा है। ऑलमोस्ट पूरे पूरे दिन बारिश होती है। कोच्चि में भी हो रही है बट कंपैरेटिवली त्रिशूर से थोड़ी लेस है। बट हम केरला में बारिश को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर्स मूड। सो एनीवेज, यहाँ पे मुझे बारिश देखने में बहुत अच्छी लग रही है। त्रिशूर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं और एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो ये उसी हाउस का व्यू है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक वेल भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है देखना। ये हम लोगों के लिए थोड़ा अनकॉमन होती हैं ये चीज़ें। और आज मेरी मम्मी ने मुझे ब्रेकफास्ट में दिया है 1 कप चाय, मसाला चाय एंड मम्मी का फेमस पराठा। ये पराठा हमारे ही बीच में फेमस है, यानी मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा के बीच में। हमें ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे सुबह सुबह बड़ा गुड सा पराठा दिया है। और त्रिशूर में आती हूँ मैं तो टेम्पल ज़रूर जाती हूँ। मैं हूँ अभी त्रिशूर के कुरकनचेरी के शिवा टेम्पल में और मैंने ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ ऑब्जर्व करी। आप भी देखो ध्यान से, ये जो पिजन है ये राउंड राउंड परिक्रमा टाइप का है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जनरली पिजन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, इनके अंदर बहुत फियर होता है, ये पास नहीं आते हैं। लेकिन आप देख सकते हो ये मेरे कितने ज़्यादा पास आ रहा है और इसको कुछ भी डर लग ही नहीं रहा है। आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड। यू कैन सी लाइक this pigeon is not at all bothered about whoever is coming, whoever is going. So that's what I found it strange. आपको भी अगर कुछ अलग लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान आ गए हैं। और अब मैं सुबह की ट्रेन लेके जा रही हूँ कोच्चि के लिए। और मैंने ये आल्वा में बस ली है जिसमें मैं ड्राइवर अंकल के पास में बैठ के व्यू बड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप सोचोगे बस इतनी खाली क्यों है, मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस व्यू को देख के। बिकॉज KSRTC, getting a empty KSRTC in Kerala is a very strange thing. Anyway, it is the best thing which I enjoy a lot. और मैंने आज आके ट्राई की है ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, मुझे नहीं पता था ब्लैक कॉफ़ी इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें लोग बता रहे थे कि ब्लैक कॉफ़ी इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। सो आई जस्ट ट्राइड इट बट इट वेरी हार्ड फॉर मी टू फिनिश। सो एनीवे, आई जस्ट हैड माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। और इतना ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बेल्जियम वेफल के पास। टुडे वी गॉट टू नो दैट देयर इज सम ऑफर गोइंग ऑन इन बेल्जियम वेफल. That is for 100 rupees they are going to give us whatever we want, I think. So we 3 hungry people came here. So what is the offer going on? 100 rupees. So for 100 rupees we came. We all got drenched in rain. Somehow we reached here. And now we are waiting for other friends also to come. But there is a very very huge block inside Belgium Waffles. अच्छा, आप इंस्टाग्राम का मैजिक देखिए, कितने सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। For 100 rupees reel, sorry, after seeing 100 rupees reel, they all are checking the reel here so that they can give us. Go with the reel, do not check the menu. So this was the reel which we saw on Instagram, and after seeing this reel we came over here, that in 100 rupees Belgium waffle or waffle, whatever we say, just I do not know the right pronunciation. After seeing this only we came over here. So we are trying to show this to the person who is standing in the cash counter that we need only the one which is for 100 rupees. So that's what we are trying to show them. Anyway, we were just seeing like what is the real price to catch on, but it was time taking, so we came for some Kerala snacks. And now we have just came to this place. I do not remember the name of this place very exactly, but it's in Kakanad near Olive Courtyard. So you can comment if you know this place. So we are having lot of Kerala bhajis. Bhaji is not there. This is banana fry. Another one. We got a basket full of snacks. You can have any Malayalam
Sorry, Kerala snacks. They are offering plates and see our condition. Chai, coffee. Coffee. So apart from banana fry, I do not know the name of any of the snacks. So you just comment over here and let me know what is the name of the snacks which you are seeing on our table. So these all are Kerala snacks specifically. I don't think so any snack would be outside Kerala. Like these are proper Kerala evening snacks which everyone enjoys with chaya, kapi, kattan chaya and so on. And I am very much hungry. That's why I'm eating like this. So please forgive me for my way of eating. Some chocolates are inside. Actually, look. Show your tits. Finally, after this much wait, we got our waffles. It was very much tasty. Now we came for a new search. Actually, in Kochi, Info Park, Kakanad, there are a lot of this office buildings are being inaugurated. So one of the most, you can say, like controversial office building which has been recently inaugurated is this Twin Towers. So this is called as Twin Towers, which I am going to show you. So via Smart City Gate I am entering. So in Kochi, not I am saying Kochi actually, basically in Kakanad Info Park, there are so many phases in like phase 1, phase 2, Carnival Info Park, and now this is Smart City. So inside this you will find some companies and some big buildings, but this is the building which everyone is very much amazed because this has like almost proper very premium kind of services inside it. So I cannot go inside because I am not an employee of any of the company from this building. That's why I can't go inside, but I think it has very much good parking system and very much good interiors, bathrooms, everything is really good because for sure this is a project of Lulu, and Lulu does everything very like in a premium manner. That's what I've heard of, but I really like the ambience of this location. Because I can't go inside, that's why I'm making a video from outside itself, because as I told you na, only the people who are from Info Park, they can go inside, and not inside like those who are working in this IT Infrabuild PVT Ltd, so they can go and make the video from inside. But as I'm not an employee of this building, but I'm a part of Info Park, that's why I came so far here. But if you are an outsider, you won't be able to come like that because you won't be having the access to come over here. So I just wanted to show you this. I have heard like it is the tallest building either in Kerala or either in southern part of India. That I'm not very much sure. You can comment and let me know if you have any other information. But yeah, it is very huge, and the lighting and all are very good. I do not think so like so many companies have started operating or not, because it is like almost it got inaugurated last week only. So that's why you can see like not so many people are coming out from here, though it's a working day also. But nowadays, if you will come in Info Park, you will see lot of shining buildings, because now day by day the inaugurations are happening, new buildings are coming. So it is becoming so much beautiful view in Info Park. And yeah, if you want to apply in Info Park, please start looking for jobs on LinkedIn specifically. आप सबने तो सुना ही होगा कि इन्फो पार्क में ट्विन टावर ओपन हुआ है, और आप ये देख सकते हो we are in front of the twin tower. Because here is no light, so we are using our mobile camera. So, twin tower के सामने तो ये है वो famous twin tower जिसको कहते हैं, it is the tallest building. Now I'm not very sure whether it's in Asia or entire South India or wherever it is, but yeah, it is the tallest one. We are very unni in front of the building. Aparna is there with me, she is laughing. We are unni in front of the twin tower. And we were just roaming around and we came here anyway, because we are not the employees who have their company inside Twin Tower, so we cannot go inside. So that's why we are shooting outside, shooting in the sense like making a video, okay? And if you wanna come and see, you should have access to come inside. So I don't think so anyone will have the access, and just because we are here, because we have our office ID cards, so it's nice to see.
Anyway, like we have heard a lot about this building and recently inauguration happened. So you want to tell us something about the Twin Tower, Aparna? It's looking beautiful. So it's nice. Like recently inauguration happened here. So many people came, and the main person who have built this is like Lulu is very famous they were very famous in Kerala, Lulu, and now they are famous in all over India, and outside India anyway they are famous because now they have a branch in Lucknow also. And in Kochi we have, in Info Park phase 1 we have one Lulu Cyber Tower, and here is another branch, Lulu Cyber 2. No, sorry, what's the name? Lulu IT 2. So good developments. Anyway, we are not working here, so we have to go because it's getting late. It's not that late, but it can rain, and we should go back to home, ma'am. Yeah, let's go. Let's go. Bye. तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा. ओके, अदरवाइज़ जो भी लोग आईटी मतलब इन्फो पार्क में वर्क नहीं करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो लोग जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिए ताकि आप उनको रेफ़र कर सकें, बिकॉज वी कैन हेल्प ईच अदर. वी ऑल आर लाइक टुगेदर इन दिस, सो वी कैन हेल्प ईच अदर टू ग्रो अहेड. Relax. Just get it good. Start flipping. The main thing is we'll give. Should I keep something? Yeah. No, every corner has to be cooked. So I'm making a round like this. Every corner has to be cooked properly. Yeah, up down. See, but I am rotating the chapati like this. So now every corner has to. Basically now it is cooked. No need to do more. But it didn't got that. So here are some chapati sessions going on. So this is all about diversity. Like I have learned how to make dosha, put kadla curry, and now we all are learning how to make chapati. So that's the power of diversity. When we go, we understand the culture, we grow. So that's how we like it. तो ये था मेरा आज का ब्यूटीफुल सा व्लॉग, केरला का, कोची का, काकनाड का. तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.